Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is episode 129 in this beautiful series जहां पे हम लोग overall market का top down approach करेंगे using 7-step analysis where the 7 steps are price, pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment. Using top down approach यानी कि हम लोग 3 time frames का analysis करेंगे. That is monthly, weekly and daily, where monthly depicts long-term trend, weekly depicts medium-term trend and daily depicts short-term trend. फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और जिस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे उसी तरीके से आप लोग डेली आवरली 15 मिनट्स 5 मिनट्स और 15 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 1 मिनट चार्ट का भी एनालिसिस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर ट्रेडिंग इन BTST इंट्राडे और स्कैल्पिंग ऑल्दो दैट्स नॉट माय रिकमेंडेशन दैट स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे but even if you want to do BTST you can do using daily, hourly and 15 minutes time frame, right? So let's quickly begin with weekly mastermind for this week so that we can understand that what are the best performing sectors, what are the weak performing sectors and कौन से sectors के stocks में जाके हम लोग जो है long trade ले सकते हैं, कौन से sectors के stocks में जाके हम short trade ले सकते हैं and so on. So once again welcome to weekly mastermind for 24th of August जहाँ पे हम देखेंगे पहले मार्केट इंडेक्स देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी अप बाय 0.96, सेंसेक्स अप बाय 0.87, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.34, मिड कैप अप बाय 2.39 which is actually good. India VIX down by 5.09 and USD INR down by 0.31 which is actually very good for us. Then we have Nifty 50 का चार्ट मंथली में अगेन sort of ऐसे कह सकते हैं इंडेसिसिव कैंडल फॉर्म हो रही है विद बिग शैडोज ऑन द अपर एंड लोअर साइड एंड स्मॉल बॉडी बट द बेस्ट पार्ट इज जो बॉडी है वो ग्रीन कलर की है सस्टेनिंग अबव 60 विच इज अ गुड पार्ट. वीकली में अभी भी 40-60 के बीच में है बट द बेस्ट पार्ट इज इट इज अबव मूविंग एवरेज. एंड देन वी हैव डेली चार्ट जहां पे उसने फिर से 60 का रेजिस्टेंस ले लिया विच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश. प्लस वहां पे जो दो लास्ट के कैंडल्स फॉर्म हुए हैं विच इज लाइक द लास्ट कैंडल विच हैज बीन फॉर्म्ड इट इज लाइक अ लाउड मूव इटसेल्फ जिसने ऑलमोस्ट 3 दिन की जो मूवमेंट है उसको स्वॉलो कर दिया. दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सिर्फ जो गैप था उसका जो है परसेंटेज वाइज हमें वीकली क्लोजिंग में देखने को मिला है बट स्टिल दैट्स गुड एज कंपेयर टू having lower top lower bottom. So let's see whether it is going to sustain in a consolidation zone and break out of 60 or not. Then we have Nifty Bank monthly above 60, weekly sideways, daily around 40. So let's see whether next week it is going to take 40 support or not because अगर वो 40 support ले लेता है then it will mention I am not so bearish. So again there is a difference between Nifty 50 and Bank Nifty जहाँ पे Nifty 50 has already confirmed 60 resistance which means it is mentioning I'm not so bullish और यहाँ पे it is almost around 40 और अगर यहाँ से bullish candle form होती है it will mention I am not so bearish. Plus अगर यहाँ से RSI 40 का ब्रेकडाउन हो जाता है then it will continue further and form lower top lower bottom. Then we have private banks monthly around 60, weekly sideways, again daily 40 के आसपास है, similar condition as of Nifty Bank. Then we have PSU banks monthly around 60, weekly sideways, daily में 60 का resistance लिया है. तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन निफ्टी 50 जैसी है जहाँ पे इसने 60 का रेजिस्टेंस लिया है by saying that I am not so bullish. So we'll have to wait for further confirmations. Then we have sector specific में except Bank Nifty all the sectors were on the positive side जिसमें से auto was the best performing sector up by 5.01 followed by realty up by 3.44 and so on. एंड मीडिया में नेग्लिजिबल मूवमेंट थी. सो निफ्टी IT मंथली साइडवेज वीकली 40 के नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद राइट नाउ इट्स बिटवीन 40-60 एंड डेली में भी 40-60 के बीच में आ चुका है. सो लेट्स सी वेदर दिस इज द कंफर्मेशन फॉर बेस फॉर्मेशन और नॉट. Then we have auto monthly above 60, weekly में fresh breakout किया है and after so many weeks, actually so many months, now it has finally broken out. And मैंने ये भी काफी बार वीडियोस में बताया है that the longer and tighter the squeeze, stronger the move either on the upside or on the downside. And as you can see, Monday को हमें काफी अच्छा gap up देखने को मिला and then bullish closing भी थी. After that, we have seen like last 3 were the bearish candle. So let's see. Maybe it is going to take RSI 60 support or not and it is going to form higher bottom or not because that's the bigger question. Because अगर वो higher top higher bottom बनाने वाला है so first it will have to form a higher bottom here and it will have to take either moving average or RSI 60 का support और in fact like price action अपने हिसाब से भी चल सकता है. So it can take support slightly above moving average as well. So like I'm mentioning moving average and RSI 60 का support as a good condition from buying perspective and so on. So Nifty Auto has now turned into a bullish trend. Then we have Nifty Metal monthly around 60, weekly sideways, daily भी sideways.
एंड एज यू कैन सी यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कंफर्म किया है. सो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट, सो वील हैव टू वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस टू ब्रेक आउट. Then we have FMCG मंथली, वीकली, डेली, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अगेन साइडवेज. FMCG में यहाँ पे भी वीकली में भी कंसोलिडेशन बन रहा है, मंथली में भी एज यू कैन सी 4 मंथ से ऑलरेडी इट्स इन अ कंसोलिडेशन अराउंड मूविंग एवरेज इटसेल्फ, एंड डेली में भी काफी ज्यादा स्क्वीज बन रहा है. सो वील हैव टू वेट एंड वॉच वेदर इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन. देन वी हैव एनर्जी मंथली, वीकली, बोथ आर साइडवेज. डेली में तो 40 के नीचे सस्टेन करने के बाद, 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद, नाउ इट हैज लाइक ब्रेकन आउट ऑफ RSI 40, बट अगेन यहाँ पे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फिर से RSI 40 का ब्रेक डाउन कर दिया है. सो एनर्जी इज वन ऑफ द वीक परफॉर्मिंग सेक्टर्स. देन वी हैव फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली, डेली, बोथ साइडवेज, एंड मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया तो है फ्राइडे को, बट अगेन कंफर्मेशन का वेट करना होगा. सो इधर इट विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फार्मा विल टर्न इनटू ईदर अ बुलिश सेक्टर और अ बेरिश सेक्टर. देन वी हैव इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली, डेली, बोथ साइडवेज, एंड अगेन यहाँ पे जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज चल रही थी, बट आफ्टर दैट नाउ इट हैज ब्रेकन आउट of that previous top. So let's see whether it is going to form higher bottom or not. If it forms, then it's a well and good thing, and there's a possibility that once it breaks out of RSI 60, so that this could also be the next best performing sector. Then we have realty monthly sideways, weekly sideways, daily be sideways. Again, we'll have to wait for proper breakout or breakdown in order to trade either on the longer side or on the shorter side, depending on the confirmations. Then we have media monthly, weekly, daily, both side, like all 3 time frames are in a consolidation, and इसको तो हम avoid करते ही आ रहे हैं. So again, we'll avoid this particular sector as well, right? So for the time being, इसमें जो है auto sector has given a very fresh and very good breakout, so we can watch out for that particular sector. And except that, काफी सारे sectors में breakout या breakdown का confirmation हमें अगले हफ्ते मिलेगा, and based on that either we'll go on the longer side, we'll trade in those sectors, or we'll trade on the shorter side. अगेन जिस वे से मैंने एनालिसिस किया है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक का भी एनालिसिस करना है, एंड देन यू हैव टू डू द ओवरऑल like you have to apply 7 step process on all the 3 time frames from swing trading perspective, so as to understand कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और जिसमें आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, और एल्स कौन से स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक बहुत वीक हैं, तो जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन. So make sure you do that, and in the meantime, if you want to strengthen your 7 step analysis, you can check out our basics of technical analysis series. 2 से 3 बार आपको देखनी ही है. You have to do 100 charts a day, like in the form of analysis, in the form of back testing, so as to have a strong grip of all those topics. So like strong grip of all those topics. So make sure you do that analysis, 100 charts a day, and I promise you that you will be a master in technical analysis and so on. So make sure you do that, and I'll see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.